तो जी जनाब, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे when और why का इस्तेमाल। when का मतलब है कब और why का मतलब है क्यों। लेकिन अमूमन ये दो अल्फाज जो W.H क्वेश्चंस के जुमरे में आते हैं, ये दोनों अल्फाज जुमले को सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। Both of these two words are used for interrogative sentences. So let's come and learn it by the help of the example we have already given in the previous videos, the use of what and where. So if you have not even subscribed to our channel, then please first of all subscribe our channel and then just come to the description and see another videos we have already uploaded to the channel. So let's come and learn the use of when and where. From these sentences we are going to elaborate, we are going to explain the use of when and where, that when we will use when and when we will use where. So the first sentence is, when your father is coming to Pakistan, तुम्हारा बाप पाकिस्तान कब आ रहा है। When will be the first Ramadan, पहला रोजा कब होगा। When we will go to Lahore, हम लाहौर कब जाएंगे। When the train will come, ट्रेन कब आएगा। Why is the baby weeping, बच्चा क्यों रो रहा है। दिए गए तमाम जुमलों में आपने when का इस्तेमाल जाना। अब हम where का इस्तेमाल जानेंगे कि where को हम कब इस्तेमाल करेंगे। When we will use when. So let's come and learn it. So the first example is, आप इस तरह क्यों देख रहे हैं। Why are you seeing so? मतलब आप ऐसा क्यों देख रहे हैं। The next example is, why you will not come? तुम क्यों नहीं आओगे। Why you are late? आपको देर क्यों हो गई। Why did Aslam not kill the snake? असलम ने सांप को क्यों नहीं मारा। Hope that you would have learned a little bit from the given examples. So if you are interested in English learning, so when we upload a new video, you will be fine. So please carry on and learn English language with Aziz.